Okay, in this video we are going to start with what are the various types of graph. First of all, we have null graph. A null graph is a graph in which there are no edges between its vertices. It is also called as an empty graph. See, here we have, this is a graph where we have just two vertices and no edges. So this is a null graph with two vertices. Similarly, this is a graph where we have three vertices and no edges. So again, it is a null graph with three vertices, and same is the case with this particular graph with four edges. A null graph is denoted by n, capital N and small n, where capital N denotes null graph and the small n in the subscript denotes the number of vertices in that particular graph. For example, this particular graph can be denoted as n2, this can be denoted as n3, and this can be denoted by n4. So the general notation is capital N, right? The next type of graph is a trivial graph. A trivial graph is a graph which has only one vertex. Obviously, if it has a one vertex, there cannot be any edge. So it is a trivial graph with just one edge. Sorry, with just one vertex. Third type of graph is a simple graph. In a simple graph, we shouldn't have any parallel edges and we shouldn't have any loops. Now, what is a loop and what is a parallel edge? See, when a node has an edge with itself, it is known as a loop. And when we have multiple edges between two particular nodes, then we call this as parallel edges. So a simple graph is the graph which has no parallel edges and no loops. For example, this is a parallel graph, and later we'll study then the graph which is not a simple graph, that is which has a multiple edges, that is known as multi-graph. We'll study that. It'll come in the upcoming slides. Next we have undirected graph. As the name suggests, undirected graph is a graph whose edges are not directed. Like in this particular graph, we don't have any direction in the edges. That is, if we talk about any particular edge, we can go from E to D also, and we can go from D to E also, because it has no direction. So a graph which has no directed edge is known as an undirected graph. Next is a directed graph. In a directed graph, we have a particular direction to the edge. For example, if we take this particular edge, this edge goes from A to B, so we can travel from A to B in this graph, but we cannot travel from B to A because it is a directed graph. The edges are not bidirectional in such graphs, right? And the direction is depicted using the arrow. Now, next type of graph is a complete graph. A complete graph is a graph where every pair of vertices is joined by exactly one edge. What do you mean by, like, we have, it says that it should contain all possible edges. For example, this is a graph with three vertices. So A is related, or A is connected to B and C, B is connected to A and C is connected to A and B. No more edges are possible. Hence, it is a complete graph. And a complete graph is represented by Kn. Since this has three vertices, so this is a complete graph with three vertices represented by K3. This is a complete graph of four vertices represented by K4. See, A has an edge with B, C as well as D. Then B has an edge with A, C and D, and C has an edge with B, A, D, and D has an edge with A, C and B. So this is a complete graph because no other edge is possible in this graph, right? Such kinds of graph where all possible edges are present, we call it as a complete graph. Next type of graph is a connected graph. A connected graph is a graph in which we can visit from any vertex to any other vertex. That is, there is no break between the paths. For example, I take any two arbitrary nodes, let us say B and H. I want to travel from B to H. So in a connected graph, we'll always have a path from one node to another. We can travel it like this, from B to A to D, then D to F, F to E, and E to H. Or we can travel in this direction, B to C, C to D, C to F, F to G, and G to H. So we have a path, right?
So there will be no two nodes in a connected graph for which we do not have a path to travel from one node to another. In the above example, we can traverse from any one vertex to any other vertex. It means there exists at least one path between every pair of vertices. Therefore, it is a connected graph. It will be more clear when we study the next type of graph, that is disconnected graph. For example, in this graph, we do not have a path between node B and node H. We'll go from A to B, A to D. Then how can we move from D to F? There is no edge between this, right? So there is a missing edge. We cannot travel from B to H. Such kinds of graph which are which do not have a path between certain pairs of nodes are called as disconnected graphs. See, the above graph consists of two independent components which are disconnected. इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो अलग अलग ग्राफ्स हैं, दोनों एक ही ग्राफ है. दिस इज़ अ ग्राफ बट इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट components which are disconnected. This is component 1 and component 2, but they both form a single graph, a single disconnected graph. Since it is not possible to visit from the vertices of one component to the vertices of other component, therefore it is a disconnected graph. एक किसी disconnected graph में हमारे पास एक नल नोड भी हो सकते हैं. नल नोड कहने का मतलब है कि जिसकी डिग्री 0 हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं ABC और मैं एक और नोड ड्रॉ कर दूं D विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस ग्राफ. सो दिस इज़ अ component 1 and this is our component 2 and this graph is disconnected, right? The next type of graph is a regular graph. Now regular graph is a graph in which degree of all vertices is same. See, we have this graph. Let us say A, B and C. The degree of A is 2, the degree of B is 2 and the degree of C is 2. That means all the vertices have same degree which is 2. So this particular graph will be known as two regular graph. Again, in this example we have 4 vertices and the degree of all the vertices are 2. So this is a two regular graph. If I make some changes in this graph, if I add this particular edge and this particular edge, now you observe that the degree of each of the vertex becomes 3. So this becomes a 3 regular graph, right? So I hope it is clear what is a regular graph in which all the vertices have the same degree. Next we have cyclic graph. A graph with n vertices where n is greater than equal to 3. Now just notice this condition. Why is this condition imposed here? Why n is greater than equal to 3? Because whenever n will be less than 2, there is no possibility of cycle. For example, if I take just two edges A and B, how can I form a cycle in this? I can have at most one edge between A to B and there will be no cycle, right? We are not talking about parallel edges here. We are talking about simple graph. So in simple graph, I cannot have multiple edges, I cannot create a cycle when I have less than 3 nodes. So we have imposed a condition that n should be greater than equal to 3, and n edges forming a cycle of n with all its edges is known as a cycle graph. That means जिस भी ग्राफ में हमारे पास एक भी साइक्लिक पाथ अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल अवेलेबल है. What do you mean by cycle? That you start from a node and you travel all the vertices of the graph and end at the same node. जैसे यहाँ पे मैंने B से स्टार्ट किया ट्रैवल करना, मैं A पे गई, C पे आई और फिर C to B. I start at B and I end at B, so it forms a cycle. So and since it forms a cycle of 3 vertices, so we say that it is the cyclic graphs are denoted by Cn. This is a C3 graph, this is a C4 graph and this is a C6 graph, where this n is the number of vertices in the cycle. Here we have a cycle of 4 nodes, so C4, and here we have a cycle of 5 vertices, so this is a C5 graph, right? So all these are the cyclic graphs. Next we have acyclic graph. Again it's very simple. A graph which do not contain any cycle is called a acyclic graph.
Next, bipartite graph. This is one of the important graphs and a little confusing as well. Bipartite graph में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी वर्टिसेस अवेलेबल होती हैं हम उनको दो डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेट 1 एंड सेट 2. सी यहाँ पे क्या लिखा है, अ ग्राफ जी वी इज कॉल्ड bipartite if its vertex set can be decomposed into two non-empty disjoint subsets v1g and v2g in such a way that each edge E has at least one joint in v1g and the other point in v2g. कहने का मतलब ये है कि जितने भी गिवन वर्टिसेस हमारे पास हैं हम उनसे दो डिसजॉइंट सेट्स बनाते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ए और सी को एक सेट में रख दिया है और बी और डी को एक सेट में रख दिया, सच दैट किसी भी सेट में आपस में कोई एजेस नहीं होनी चाहिए. इस तरह की एजेस अवेलेबल नहीं होनी चाहिए. जितनी भी एजेस अवेलेबल हों वो ऐसी हों दैट इट गोज़ फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. मान लो अगर ये मेरा v1 सेट है और ये मेरा v2 सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एजेस जा रही हैं वो v1 से v2 में जा रही हैं. कोई भी एज v1 में नहीं होनी चाहिए, आपस में नहीं होनी चाहिए v1 के नोड्स में, और कोई भी एज v2 के आपस में नहीं होनी चाहिए. तो हम कहते हैं कि वो बाइपर्टाइट ग्राफ है. मैं इसको एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, let me draw a graph A, B, C, D, E. Right? Let me take this example. Now, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं. लेट मी टेक दी नोड्स वन बाय वन. सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट में ले लिया, ठीक है. अब ए से मेरे पास जितनी भी एजेस बन रही हैं बी और सी, ऑब्वियसली वो इस सेट में नहीं रख सकते हम, बिकॉज सेम सेट की वर्टिसेस में कोई एज नहीं होनी चाहिए. तो लेट अस से बी और सी हमारा इसमें है और इसके एजेस को भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ए टू बी एंड ए टू सी. नाउ साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बी और सी में भी कोई एज नहीं होना चाहिए. इट इज़ ट्रू, राइट. बी और सी में कोई एज नहीं है. नेक्स्ट डी नोड, नेक्स्ट हम प्लेस करते हैं डी नोड. अब डी हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? डी में हमारे पास बी और सी के साथ तो वर्टिसेस हैं लेकिन ए के साथ कोई वर्टेक्स नहीं है, तो फिलहाल हम इसको इस वाले सेट में प्लेस कर देते हैं और इसकी जो वर्टिसेस हैं बी और सी के साथ एजेस जो हैं वो ड्रॉ कर देते हैं. अब हमारे पास बचा है एक सेट, दैट इज़ ई. अब जो ई हमारा वर्टेक्स है उसको हम इस सेट में नहीं प्लेस कर सकते, इस सेट में नहीं प्लेस कर सकते बिकॉज उसका बी के साथ एक एज है. ऑल्सो हम उसको इस सेट में भी प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज उसका डी के साथ भी एक एज है. इसका मतलब हम इन दोनों सेट में से ई को कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, विच मीन्स दिस सेट इज़ नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ, राइट. सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू टेस्ट वेदर अ ग्राफ इज़ बाइपर्टाइट और नॉट. नेक्स्ट वी हैव अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है? जो बाइपर्टाइट भी हो और कंप्लीट भी हो. मतलब हमने उसे दो सेट्स में तो डिवाइड कर दिया सच दैट ऑल दी एजेस आर फ्रॉम सेट 1 टू सेट 2, लेकिन उसमें सारी पॉसिबल एजेस भी प्रेजेंट होनी चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पे नोड ए है तो वो सेट 2 के सारे नोड से कनेक्टेड होनी चाहिए. ऐसे ही नोड बी हमारी यहाँ पे पी क्यू आर से कनेक्टेड होनी चाहिए, नोड सी भी हमारी पी क्यू आर से कनेक्टेड होनी चाहिए और नोड 3 भी पी क्यू आर से कनेक्टेड होनी चाहिए. और जो इसका डिनोशन होता है दैट इज़ के एम कॉमा एन, वेयर एम इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 एंड एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेट 2. Next we have a star graph. A star graph is a complete bipartite graph in which n minus vertices have degree 1 and a single vertex have degree n minus 1. मतलब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है, n minus 1 vertices have degree 1 and a single vertex have degree n minus 1. n क्या है? हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस. अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो हमारे पास n2 है, तो दोनों की हमारे पास जो n minus 1 वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री क्या है? हमारी 1 है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी डिग्री 2 है, बाकी सबकी डिग्री 1 है. इस टाइप के हमारे जो भी ग्राफ्स होते हैं दे आर स्टार ग्राफ. नेक्स्ट वी हैव वेटेड ग्राफ. वेरी सिंपल, जहाँ भी हमारे पास एजेस के ऊपर वेट आ जाता है उसको हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ मल्टी ग्राफ. मल्टी ग्राफ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे भी हमारे पास दो एजेस के बीच में दो नोड्स के बीच में मल्टीपल एजेस आती हैं उसको हम मल्टी ग्राफ बोलते हैं.